Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर एक नजर के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Key domestic share markets closed almost flat amid negative cues from Asian shares. Rupee weakens by 25 paise against the US dollar and Brent crude oil prices surged to $94 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। एशियाई बाजारों में मंदी का दौर, डॉलर के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की गिरावट और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $94 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 37 अंकों की मामूली बढ़त से 58,803 के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों के नकारात्मक संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में मंदी रही और सेंसेक्स निफ्टी दोनों सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3 अंक की मामूली गिरावट से 17,539 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप में 0.3% का नुकसान रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। Sensex and Nifty today closed almost flat amid negative cues from the other Asian share market. Sensex finished above 58,800 level. Sensex added 37 points to close at 58,803. Divergently, Nifty slipped marginally by 3 points to end at 17,539. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index slipped by 0.35% and the small-cap index ended 0.4% up. In the Sensex pack, 11 companies posted gains while 19 logged losses. HDFC climbed 1.8%, ITC gained 1.7% and Larsen & Toubro rose 1.5%. On the other hand, Maruti and Reliance both tumbled 1.2% each. IndusInd Bank plunged 1.4% and Nestle India declined 0.9%. In sectoral indices, at the Bombay Stock Exchange, 6 sectors gained while 13 logged losses. Capital goods sector rose the most as it added 1.1%. Industrials gained 0.9%. Finance and BankX both surged 0.4% each. On the other side, oil and gas and energy, both sectors declined 1%. Metal index fell 0.9% and basic materials slipped 0.6%. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 1,767 companies gained while 1,659 companies fell. Shares of 141 companies remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed today. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 25 पैसे की गिरावट से $79.80 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स 0.29% की बढ़त से 109.37 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, किस तरह से पूरे बाजार की दशा और दिशा को आंकते हैं? तकरीबन 59,000 सेंसेक्स बना हुआ है और काफी बेहतर नजर आता है अगर पूरे दृश्य को देखें। और चूंकि लेकिन एक बात सिर्फ यही है कि रुपए में कमजोरी लगातार बनी हुई है। दोनों चीजों को किस तरह से आंकते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पे? तो अमित, जैसे आपने कहा कि जो सेंसेक्स का और निफ्टी का लेवल है वो काफी स्टेबल लेवल है और मैं कहूंगा कुछ हद तक चौंकाने वाला है, क्योंकि दुनिया में जो बाकी बड़े बाजार हैं वहां पर हम सभी जगह काफी गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वार्टर में, जो अभी क्वार्टर चल रहा है, जुलाई अगस्त क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, इस क्वार्टर में दुनिया जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। करीब 11% हमारा इंडेक्स बढ़ा है और जितनी भी बड़ी मार्केट्स देखें जहां पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप है, उसमें भारत का प्रदर्शन नंबर 1 है, सबसे बेहतर प्रदर्शन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो दशा आपने बात करी स्टॉक मार्केट की वो काफी अच्छी है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। और ये सप्ताह अगर आप देखें तो शुरुआत बड़ी वॉलेटाइल हुई थी, क्योंकि यूएस में भारी गिरावट थी और उसके बाद काफी वॉलेटाइल था वहां पर। तो शुरुआती दौर में काफी वॉलेटाइल मार्केट सही सस्ता, लेकिन आते आते मुझे लगता है आज का दिन कंसोलिडेशन का रहा। कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी थी, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी हमने देखी। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि भारत के बाजारों की दशा भी बहुत अच्छी है और दिशा अगर आप पूछें
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आफ्टर मे बी अनदर 2-3 वीक्स मुझे लगता है बाजारों में और मजबूती आने के मुझे उम्मीद है, जैसे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आएंगे और यूएस फेड का जो डिसीजन है 22 सितंबर को, उसके बाद ग्लोबल मार्केट भी बेहतर हो सकते हैं। भारत की मार्केट डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। जी पुनीत, जिस तरह से आपने उम्मीद जाहिर की है कि भारतीय बाजारों की दशा और दिशा दोनों काफी बेहतर रहने वाली है, क्या माना जाए? आपने एक चीजों का स्पष्ट संकेत दिया कि कंपनी जगत से बेहतर नतीजों की आहट आ रही है। क्या इसके साथ साथ ये भी माने कि जिस तरह से रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पिछले दिनों कहा था कि शायद महंगाई की दर अब अपनी पीक आउट यानी अपने उच्चतम स्तर को पार कर चुकी है, क्या ये भी एक स्पष्ट संकेत माना जाना चाहिए कि महंगाई की दौर में कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में भी जो वो उछाल था वो भी कहीं न कहीं नरम होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा अमित, और अगर हम पूरे डेटा को देखें जो आ रहा है वो हमें बता रहा है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन में काफी गिरावट आएगी। जो फूड इन्फ्लेशन है वहां पर हम देख रहे हैं ये फूड प्राइसेस इस मानसून सीजन में ज्यादा नहीं बढ़ी, वो कम है, उसमें गिरावट नहीं है लेकिन कम बढ़त हुई है। यदि आप कमोडिटी प्राइसेस को देखें, चाहे क्रूड ऑयल की बात करें चाहे हम मेटल्स की बात करें, सभी कमोडिटी प्राइसेस में हम देख रहे हैं पुल बैक आया है। और अमेरिका में भी जो डेटा आ रहा है, हालांकि वो क्योंकि लैग से अगर आप ईयर ऑन ईयर डेटा देखते हैं तो लगता है कि 6%, 6.5% है, लेकिन मंथ ऑन मंथ जो डेटा आ रहा है वहां भी लगता यह है कि आने वाले 2-3 महीने में जो डेटा अमेरिका में आएगा वो भी इन्फ्लेशन उसमें काफी कम आ जाएगा। तो मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन का जो एक बहुत बड़ा खतरा कह लीजिए या डर कह लीजिए, वो डेफिनेटली अगले 1 या 2 महीनों में उसमें काफी कमी आएगी और वो काफी पॉजिटिव संकेत होगा मार्केट्स के लिए भी। और डेफिनेटली जो एक इंटरेस्ट रेट्स को लेकर मुहिम छिड़ी हुई है पूरे दुनिया में और इंटरेस्ट रेट्स को बहुत अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, उसमें भी काफी कमी आएगी। Puneet, these are the underlying economic values when you talk about what the Fed is going to do in terms of the discount rate and what the central bank at RBI will do. Just looking at the stock market right now, interestingly, the FII, FPIs were the net buyers to the tune of only, in fact, they were net sellers of 9 crores and you have DIIs net sellers to the tune of 669 crore rupees. But the transaction value, they bought almost 6,500 crore rupees. They sold as much. What is this telling you about the allocation of FII inflow into emerging markets? Because we have some data on the MSCI Emerging Market Index, where India has a weightage of 13%, Taiwan has a weightage of 15%, China has a weightage of 31%. So how do the FIIs, FPIs allocating the purchase into emerging markets, including India, which is why the markets are going up and down? So interestingly, I just got today's data on MSCI Emerging Market Index, in fact. And today, India has crossed Taiwan marginally in weightage. So we are about 14+% now. And that is the latest data as of today. And Taiwan is just behind us. So India is now the second largest, you can say, weighted market in MSCI Emerging Market Index. China, of course, is at 30% and far ahead of us. But the point is that India is now being counted among the largest markets in the world. And therefore, FIIs, they have to, while they were selling, of course, we saw a lot of selling by FIIs. I think when they start buying again, India will be a very major beneficiary of buying by FIIs. What we have seen is that throughout this year, from beginning of this year till now, FIIs sold roughly $33 billion worth of stocks in net, roughly about 2.5 lakh crores. But in the last 2 months, in fact, they have been buying Indian market and they have bought about 55,000-60,000 crores worth of stocks. So I think as far as FIIs are concerned, India is very well placed. We have absorbed the selling without losing much value in terms of market capitalization. And I think now when the reallocations start and which will happen towards the end of the year, I don't see any immediate big ticket buying by FIIs, but definitely beginning November, maybe December, we will see large FII inflows in India, because that is when the international monetary policy will also kind of stabilize. So I think this time around with increased weightage, like you mentioned, in respect of MSCI index, that we'll be large recipients
of these flows. And of course, there is another hope that maybe early next year India will be included in the global bond indices. And if that happens, then I think another $40-50 billion worth of inflows could be there. What about Nifty Bank? It went up by 120 points today. It has been a star performer for the last fortnight of trading that we have witnessed. What is this telling us about the market in terms of the RBI announcement of increasing the repo rate, and that has consequently resulted in the increase in the bank rate? But again, the reverse repo rate or the deposit rate, there has been no change to that. The net interest income for banks is likely to go up. How do you see the future of PSU banking and private banking in India in the short term? So, Arjun, first thing is that whenever RBI is raising rates, the first fear is that higher rates will lead to lower credit offtake, and therefore economic growth will slow down, and that is the premise for stock markets to come down and everything. Interestingly, so we have data for RBI as of last week. I haven't seen today's data, but as of last week, the RBI data showed that credit offtake, the growth in non-food credit, had gone up by 15% year on year. And this is in comparison to about 4.5% last year. So clearly, the increasing interest rates by RBI have not affected credit offtake in India. In fact, the demand for credit has gone up to about 15%. And I'm talking about banking as a whole. But so has earnings. Therefore, there's no impact of higher interest rates on earnings and credit offtake. See, credit offtake obviously means there's more investment happening. So private sector investment is not getting hurt by RBI. So my own take from this is that the economy is doing well. And businesses, when they're investing more in businesses and they're borrowing and investing, they foresee that the economy will continue to do well. See, usually if there is pessimism, you will not find businesses will borrow more money. So right now, I think if you look at bank credit data, it tells us that going forward, we will see robust economic growth. Of course, and higher interest rates, of course, have not hurt that sentiment. I expect RBI to continue to raise rates by another maybe 50 basis points or 75 basis points. But my own take is that it won't hurt demand so significantly as was earlier feared. पुनीत, जैसा आपने अभी अंदेशा जाहिर किया कि रिजर्व बैंक शायद आधा से 0.25% तक ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है, ऐसे दौर में जब हम एक मध्यवर्गीय अगर हम खासतौर पे बात करें जिन पे EMI का बोझ काफी बढ़ गया है, और अगर उसके साथ साथ हम ऑटो क्षेत्र या रियल्टी क्षेत्र की बात करते हैं जो कि सीधे सीधे इस ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सीधे सीधे इफेक्टेड होते हैं, क्या ऑटो क्षेत्र चूंकि अभी कहीं न कहीं कठिनाई के दौर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा था, उसको बहुत चुनौतियां भी थी उनके सामने, खासतौर पे उनके कलपुर्जों से संबंधित, ऐसे दौर में रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरों में फिर से वृद्धि करता है, फिलहाल वैसे ही वो बढ़ी हुई है, क्या इन क्षेत्रों पर सीधा सीधा उसका नकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए, हमें नकारात्मक असर जरूर पड़ता है, और इनफैक्ट रेट बढ़ाने का पर्पस भी वही है कि वो डिमांड को थोड़ा कम करना चाहते हैं क्योंकि वो इन्फ्लेशन से डरते हैं. लेकिन फॉर्चुनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है. हमेशा उन्होंने कहा है कि भाई हम ग्रोथ को भी नजर में रखेंगे और इन्फ्लेशन को भी नजर में रखेंगे, और बार बार इस बात को अंडरलाइन किया है. हालांकि पिछले जो 2 पॉलिसीज रही उसमें इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा डर था, तो इन्फ्लेशन को ज्यादा मुख्यता दी गई, पर मुझे लगता है आरबीआई ग्रोथ को नजरअंदाज नहीं करेगा. अगर आरबीआई को लगेगा कि इसमें ग्रोथ में कोई हर्ट हो रहा है या इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ में असर आ रहा है, तो डेफिनेटली आरबीआई विल मॉनिटर एंड चेंज इट्स पॉलिसी. तो मेरा अपना अनुमान यह है कि दे आर लुकिंग फॉर सॉफ्ट लैंडिंग. हम बात करते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचानक से बहुत नीचे ना आ जाए या एम्प्लॉयमेंट नीचे ना आ जाए. आरबीआई इस बात की बात बार जिक्र तो करता है, और होपफुली इनकी पॉलिसी जो है इसको दे विल टेक दैट इनटू अकाउंट. पुनीत, एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से अगर हम छोटी अवधि और मध्यम अवधि और लंबी अवधि की अगर हम बात करें, तो अभी ब्याज दरों में ये जो बढ़ोतरी का असर है या ये जो बढ़त का दौर है, वो कब तक आपको लगता है कि जारी रहेगा? क्या हम इस वित्त वर्ष में ब्याज दरों में जो गिरावट का दौर देख सकते हैं?
देखिए अमित, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल होती है वो ग्लोबल होती है, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो करीब करीब सारी दुनिया में साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही कम होते हैं। अगर हम अमेरिका की, तो इसलिए इसका सही अंदाजा हम लगा सकते हैं अमेरिका को देख करके। अमेरिका में अभी 2.25 के करीब इंटरेस्ट रेट है वहां पर, और हमें लगता है कि अमेरिका में करीब 1.25% इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ाएंगे, यानी 3.5% से, हालांकि करीब वहां पर 4% की भी बात हो रही है, पर मेरा अनुमान यह है कि वहां पर 3.5 से 4% तक के बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद 3 या 4 वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स अभी और आएंगी। उसके सामने मैं यदि बात करूं, भारत में जो अभी जो इंटरेस्ट रेट हैं ये प्री पेंडेमिक रेट के ऊपर आ गए हैं। जो पेंडेमिक जब शुरू हुआ था तब इंटरेस्ट रेट कट किया था आरबीआई ने, लेकिन अब जो इंक्रीज हुआ है वो अब प्री पेंडेमिक रेट से हम इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुके हैं। तो ऑलरेडी आरबीआई ने काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और मेरा अपना अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक हम इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो ऊपर की तरफ देखेंगे। और यदि ग्रोथ में कमी आती है और इन्फ्लेशन में कोई बहुत शार्प फॉल आता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एंड में जाकर, देखिए उससे पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, उसके बाद शायद थोड़ा बहुत मामूली इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। दैट इज द एस्टिमेट वी हैव। We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पुनीत से आर्थिक जगत की स्थितियों के बारे में। पुनीत, बहुत संक्षेप में, रुपए निरंतर दबाव में है, 80 रुपए प्रति डॉलर के आसपास आ गया है, और कहीं ना कहीं बाजार में इस बात की आशंकाएं हैं कि रिजर्व बैंक ने रुपए को अपने हिसाब से संभाल रखा है। अगर ऐसा ना होता तो शायद डॉलर के मुकाबले रुपया और भी ज्यादा गिर सकता था। आप किस तरह से आंकते हैं इन आंकड़ों को? तो अमित देखिए, ये बात तो सही है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज रेट को सपोर्ट किया है, और इसका आप प्रूफ ये देख सकते हैं कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो करीब करीब $60 बिलियन उसमें गिरावट आई है पिछले एक साल में, और उसमें से कुछ पैसा तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं और कुछ पैसा आरबीआई ने यूज किया होगा जरूर टू स्टेबलाइज द रूपी। लेकिन ये मॉनेटरी ऑपरेशन देखिए पूरी दुनिया में चल रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना की करेंसी में काफी भारी गिरावट आई है, और जो करीब करीब 6.15 युआन टू द डॉलर हुआ करता था वो 7 युआन टू द डॉलर वो करीब करीब पहुंच गया है। तो सभी देशों की सभी करेंसीज में, इनफैक्ट यूरो में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आई है, येन में बहुत बड़ी गिरावट आई है। येन 110 टू द डॉलर होता था, अब वो 140 के आसपास पहुंच गया है। तो करीब करीब दुनिया की सभी बड़ी करेंसीज में गिरावट आई है। मुझे लगता है भारत में जो गिरावट आई है वो बहुत कम आई है, और आरबीआई ने बहुत अच्छा जॉब किया है कि उसको स्टेबलाइज रखा है। खुशी की बात यह है कि पिछली 2 फोर्टनाइट्स में भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की गिरने की दर थी वो कम हो गई है। इनफैक्ट लास्ट वीक $6 बिलियन का इजाफा हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो वर्स्ट पीरियड था प्रेशर का करेंसी पे, वो अब नहीं है। हालांकि यूएस डॉलर इंडेक्स आपने जिक्र किया था शुरुआत में, वो 109 से ऊपर पहुंच गया है। तो डेफिनेटली जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो सारी करेंसी सामने गिरती हैं। भारत की करेंसी में भी आज हमने देखा 25 पैसे गिरावट आई। बट देखिए, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गिरावट अब रुपए में नहीं आएगी। ये 80 रुपए के आसपास ही, 1 रुपया ऊपर नीचे, 2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, बट डेफिनेटली 80 के आसपास अब ये रुपया टू द डॉलर स्टेबलाइज होना चाहिए। Well, Puneet, what's your take on the market next week? Technically, the report saying is that the daily Bollinger Bands have started contraction. Now a consolidation is expected. What does that mean in layman's terms, and what do you expect for next week's action? Arjun, traditionally, September has been a difficult month for the markets. We've seen markets being weak in September. And I think we started off course, the global market started off very poorly in September. India did relatively better. My own sense is that that markets will consolidate in this month.
at least until 22nd of September, when the Federal Reserve will come out with its next monetary policy statement. So I think for the next 15 days or 20 days, this market is going to trade in a narrow range, should consolidate. And only after that, probably after 22nd, we will get some direction on where the Fed is headed, and therefore the markets will take the cue from there. So my own sense is the technicals are telling us that market wants to consolidate at around current levels, and there may not be very big moves in the market either way. नजर डालते हैं एशिया शेयर बाजार पर। एशिया बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% की गिरावट में नजर आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% की गिरावट में रहा, जबकि जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.5% से 1.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। And now moving on to the U.S. stock market. U.S. stocks ended mixed yesterday as persistent worries about rising global interest rates and recessions dampened investor sentiment. On the other hand, the U.S. dollar hit a 24-year high against the yen. The Dow Jones Industrial Average Index rose 0.5% and the S&P 500 added 0.3%, while the Nasdaq Composite Index slipped 0.3% each. Puneet, apart from the economic issues both in China and in the US, the currency market has seen the most amount of action. You mentioned about the yuan, the Chinese yuan depreciating against the dollar. You need more yuans to purchase $1. And on the other hand, you also have the Japanese yen, which has been depreciating in the short to medium term before the news has come out. What's your take on what's happening with the Asian giants when it comes to the currency market? So clearly, all the Asian markets are to some extent disrupted because while in China, we know that their exports, in fact, the trade deficit for China has been increasing. But that is not because their exports have gone up. It is actually because the imports have gone down, and there is the economic expansion which has really come down to about 2-3%. So and similarly with China, we have seen Australian economy, the Japanese economy, they are all slowed down. And you'll be surprised. In fact, in Germany and France, the economies are actually contracted. They've kind of shrunk in the last quarter. So clearly, the world economic growth is not very strong. The world economies are struggling, while, of course, the US is considered to be the strongest economy in the world. And therefore, we have seen the US dollar becoming more strong and going up, and all other currencies in the world practically falling against the US dollar. So that is the principal reason why investors want to be in the US dollar, because that is seen as as an island of calm or as an island of strength in a world which is in turmoil. Having said that, I think this is all, it happens. It's a cyclical thing. I don't think US wants to see its currency appreciate beyond a point, because it will create pressures for the US economy. They will start importing more and more if the dollar is stronger. So I think the currency markets are really hostage right now to the world economic conditions. My own guess is that by end of this year, by November, December, things will be much better. It will be much calmer, and I think then we should see a retreat in the US dollar, and the global economies will begin to kind of appreciate. So for the record, the yen is right now 140 to the US dollar. It was 142, so the currency market is quite volatile right now. 140 to the dollar was unthinkable a few years back. I mean, you couldn't even dream about it. And 140 yen. So it's a good time to go and visit Japan. Right now, it will be much cheaper. So you can visit. I mean, as a tourist, you can go to Europe. You can go to Japan. They'll be much cheaper than earlier, really, right now. Well, the ads have been hitting our smartphones regarding that. Coming back to the U.S. market, in the Money Matters program, you mentioned about the tech shares being under pressure. Nasdaq fell by only 31 points. So what's the future for technology shares, which have been overvalued in the U.S. stock exchange, in the Dow Jones and the Nasdaq as well? So Arjun, in fact, in the latest fall in indices, in the last, since June, we've seen, in fact, since the beginning of this year, we've seen index come down. It is the technology stocks which have fallen most. Nasdaq, in fact, is now down by more than 30% from its all-time high. So which shows a huge, it's not just a correction, it's a bear market for technology stocks. For other stocks, the fall is not more than 10-11%. So clearly, IT stocks are under pressure, and most fund managers, they have either sold to book profits
or they're sold because of a worsening outlook. My own take is that IT stocks are now very attractive, and sooner than later we will see money will come back or flow back into IT stocks. Because they are the future. That is where the real growth is. Once this initial panic or this uncertainty is over, I think IT stocks will become very attractive. In India, in fact, most of the IT bellwethers have fallen a lot. TCS is down to 3,200. Infosys is down. All the top names are down. I think it's a good time for long-term investors to make an investment there. Looking at the U.S. employment report that's come out, the unemployment is still 3.7. It was 3.5 earlier, but payrolls have gone up by 315,000 in August. Companies continue to hire. Is this a strategic move on the part of the U.S. economy to localize manufacturing, which has been outsourced to China post-pandemic? So the unemployment data in U.S. has been a real surprise, actually. The U.S. Fed itself is quite surprised that even when they're tightening and there is such high inflation, businesses continue to hire in America, and in fact, U.S. Fed continues to raise rates because they find comfort in the unemployment numbers. Because unemployment number is the biggest red flag for U.S. Fed. If unemployment numbers go up, they will stop raising rates. So until the time that employment remains stable, employment remains strong in USA, they have headroom to raise rates. Having said that, I think if we see economic growth coming down in USA, which is happening in real terms right now, then sooner or later, in 3 to 6 months, we will see some moderation in employment numbers. I don't think they're doing it deliberately. This is the way the US economy is behaving right now, and people are quite. In fact, it's been a surprise to most of us. Even wages on an hourly basis have gone up by 5.2%. So wages have gone up, employment numbers are up, inflation is higher, and like somebody, in fact, a very well-known figure mentioned that I haven't seen this in my lifetime. You see inflation high, economic growth high, you see employment high. All these factors have never come together. But right now, I think for the short term, all these aberrations happen only in the very short term. I think it's for the short term we are seeing this. Later on, it should all stabilize and normalize. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today climbed around 1.5% on expectation that OPEC Plus will discuss output cuts at a meeting on the 5th of this month. On the other hand, concern over China's COVID-19 curves and weakness in the global economy continue to limit gains. In intraday trade, Brent crude was trading at $93.85 per barrel, while WTI crude prices were at $88.10 per barrel. On Money Matters, you mentioned about how Saudi Arabia is competing with Russia over crude supplies, and therefore prices have come down as a result of it. There were calls earlier when prices were going up that the OPEC Plus must increase production. Now they're talking about cutting output. What does this mean for oil prices? So essentially, I can't fathom what they're doing really, because there are so many forces taking place. Like Iran nuclear deal is close by, and if Iran comes back to the oil market, we will have huge supply there. Then Russia and Saudi Arabia, while the coordination on production, they are competing against each other for selling. So I think it's very difficult to read what is happening in the oil market right now. But again, I think given the global conditions and everything, it will take 3 to 6 months for things to settle down. And prices, Saudi Arabia is of course trying to keep $100 as a benchmark for the oil. But it's very difficult given the present conditions. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा भाव में सोना स्टैंडर्ड 230 रुपए की बढ़त से 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 490 रुपए की मजबूती से 52,215 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,717 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी बढ़त से $17.80 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में, सोने के मुकाबले चांदी काफी मंदी के दौर पे है, चांदी की चमक को क्या हो गया? अमित, बिल्कुल, मैं आज अपना क्विक कमेंट ये देना चाहूंगा कि लोगों ने इसका नोटिस नहीं किया है, बहुत लोगों ने, लेकिन चांदी के रेट्स में बहुत भारी गिरावट आई है। कल करीब 50,000 51,000 रुपए पर केजी का रेट था दिल्ली के बाजार में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 65,000 70,000 का रेट था, वहां से कितनी गिरावट आई है। हालांकि गोल्ड में भी कमी देख रहे हैं हम, लेकिन संभव चांदी में बहुत गिरावट आई है, और मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Key domestic share markets closed almost flat amid negative cues from the Asian share market. Rupee weakens by 25 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices surged to $94 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.